you grow. नहीं है मटेरियल Yes, it is Atul Patak. The two umpires, Mr. Kailesh Tandel and Mr. Suhas Vaidya, two senior umpires tonight. SP11 had won the first match, batting first, and stalwarts had chased down the total. So this toss is really going to be very important, and it will have a bearing on the outcome of the match. So let's see how it goes. Once again, good evening and a warm welcome. You can see a good crowd gathering here on the sidelines. It's an evening affair, night matches. That will get the crowd on the ground, no doubt about it. Yes, so the Ugrow Capital Premier League Season 1 presented by Zooter. We are all set for day number 3 to get underway. It's toss time, and to flip the coin, it's going to be Mr. Abhishek. Yes, we are all ready. The two captains, who's going to call? Yes, SP11, that is Suresh Paradkar to take the call first. Mr. Abhishek to flip the coin. Heads is the call, and it is heads. Paradkar, you have won the toss. What's your decision? We would like bat first due to enough bowlers in our team. It's a good bowlers. पहले मैच में भी आपने बैटिंग किया था. उस मैच को आपने बड़ी आसानी से डिफेंड किया था आपके लक्ष्य को इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने. तो आज किस तरह का लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा करना चाहेंगे? 8 ओवर्स का ये मैच. कम से कम 100 प्लस टच करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा. और आपका वो प्लेइंग 11 सेम ही है क्या, कोई चेंजेस है? वन चेंजेस, पंकज शिरसेकर इज आउट एंड मयूर लाखन इज इन. चलिए, पराडकर quite positive. Thank you so much. Yes, wishing your team the very best. I have with me Atul Patak. आपने पहले के मैच में भी चेज डाउन किया था, तो शायद इस मैच के टॉस को जीतते तो आप फिर से एक बार चेज ही करते. तो मेरे ख्याल से इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है. किस तरह की तैयारी है? सेकंड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. जो भी टीम ये मैच जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा. बिल्कुल, हम जैसे कल एक्साइटेड थे, आज और ज़्यादा एक्साइटेड हैं. और सिर्फ सनराइज के अलावा सनसेट ही चेंज है. रेस्ट ऑल रिमेन सेम, एंड आई विश द अदर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. We will play for win. And how's your playing 11 looking like? It is almost similar. We have one change that we have already submitted to the committee. Yes, thank you. The story from the center is SP11 has won the toss and they are going to be batting first. So that's the news. And yes, it's time for a captain's photograph.
अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो। यू ग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो। यू ग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो। यू ग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा,
Hello, check. Hello, hello, check. इस पहले मैच के टॉस को जीता है SP11 and they have decided to bat first. Quite a positive decision, and this is a very, very important knockout qualifier number 1. The match that wins, the team that wins this match makes it to the semi-finals of this Ugro Capital Premier League Season 1. This is the Mumbai leg. Yes, to my right, in the digital scoring box, it is Shravan Jakul. And to my left, new physio tonight, it is Kadam, Parth Kadam. And yes, from Team Zooter, it is Miss Shruti and Miss Mirza in charge. A big thank you to our sound engineer for providing his quality sound services. And yes, Shubham is in charge of bringing you those live pictures. The two umpires, Kailesh Tandal and Suhas Subaidia. Yes, we are starting the match right on the dot. It's 6 p.m. sharp. So yes, that's great. Ugro Capital Premier League players have really been quite disciplined with their reporting on time and sticking to the schedule. A total of around 800 players in action all over India. This is the Mumbai leg, and this tournament being simultaneously played across 7 metro cities and 3 other cities. This is the Mumbai leg, day number 3, match number 7. Playtime. What a shot of the very first delivery, down on his knees, and such exquisite timing by Ritesh, making his intentions absolutely clear. He is not going to be playing the waiting game. They are going to be playing their natural game. बिना कोई हिचकिचाहट टॉस जीतकर सुरेश पराडकर ने बल्लेबाजी करने का चयन किया और उन्होंने टॉस के वक्त बताया कि वो 100 रनों का लक्ष्य उनके जहन में है. रितेश की फितरत में ही है विस्फोटक खेलना. जबरदस्त शॉट, बहुत लंबी गए, ऊंची भी गए, मैदान के बाहर. क्या बात है, जबरदस्त शुरुआत. Yes, off to a flying start here. वाकई में रितेश अपनी टीम की तरकश में वो विक्रमादित्य तीर है जिसे स्टॉलवर्ट्स को धाराशायी किया जा सकता है. बिल्कुल उजागर होकर अपनी रंगत में आकर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए. चले लाइन को तब्दील किया, थोड़ा सा अपिष्टी खेला है लेकिन भाग्यशाली रहे. गेंद नो मैंस लैंड में गिरी, बड़ी आसानी से वो दूसरा रन भी मुकम्मल किया. आज के ये मैचेस शाम में और लेट शाम में खेले जाएंगे अंडर द लाइट्स. रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया, इतनी अच्छी टाइमिंग न होने के बावजूद बड़ी आसानी से 2 रन प्राप्त किए. रन संख्या जा पहुंचती है 12 रनों पर, 14 रनों पर. पहली ओवर में सिर्फ 4 गेंद हुई है, रन संख्या 14 रन. और 4 रन मिलेंगे फिर से एक बार. थोड़ी सी दिशा से भटके और फलस्वरूप बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा. और इस वक्त मोक्षी भी सोच रही है कि व्हाट हैज स्ट्रक देम, दे हैव बीन स्ट्रक बाय अ टोर्नेडो. रनों का सहला बहता हुआ काफी शुरुआत में. अतुल पाठक ने पहले मैच में बताया था कि दे हैव गॉट प्लान ए एंड बी.
तो आज I hope that they have got that plan B and plan C in place. They will lead the plan B and plan C tonight. Yes, this is such an interesting start, electrifying start here, isn't it? And handsome, up and away she goes, sailing into the stands. That's a 72-meter hit down the ground. This is what you call entertaining the crowd. This is what you call taking the bull by its horns. The scoreline at the end of the first over is 25 blazing runs. Goodness me, would you believe it? Ritesh is on a song here. Atul now to bowl. A low full toss, driven towards the man at mid wicket, and the strike back with Ritesh. And yes, it goes without saying that when Ritesh is in this kind of a murderous mood, he needs to be given the lion's share of the strike. We'll have to wait and watch for the signal. For the moment, they have run across, and that's a bye. पहला कदम उठाओ ईमान से, पहला कदम उठाओ ईमान से, सपनों की क्या मजाल के पूरे न हो. क्या शुरुआत हासिल की है यहां पर रितेश ने. बहुत ही आला शुरुआत SP11 के लिए. अगर रितेश की इस इनिंग्स को आपने न देखा तो फिर यूग्रो कैपिटल प्रीमियर लीग में आपने क्या देखा. और एक चौका इस वक्त, ये चौका हर्षद पंचाल के बल्ले से आता हुआ. 31 रन हो चुके हैं, जबकि दूसरे ओवर की केवल 3 गेंद हुई है. Indeed, an electrifying start here. At the moment, they have no clue whatsoever, team stalwarts. They have been shell-shocked. Well bowled by the captain Atul. Yes, sir, they have got a good bowling lineup. All slow bowlers who do not try to bowl too fast, just try to make sure that they pitch the ball in the right areas. And yes, that's a strong appeal, and he gets his man. Just look at the way the team is celebrating. That is Ritesh on his way back to the pavilion. This really could be the big difference here. They will be more than happy to see the back of Ritesh. Over to the DJ. Yes, Atul, the captain, bringing all his experience into play. He is Mr. Cool as a cucumber. And yes, he gets his man. That is big fish in the net.
trying to make a comeback here. वापसी का रास्ता खोजती हुई स्टॉलवर्ट्स. नए गेंदबाज राहुल. और ये गगनचुंबी शॉट, डायरेक्ट विकेट गिरा है. बेहतरीन कैच लिया उस फील्डर ने डीप मिड ऑफ पर. 2 विकेट्स के चलते वाकई में कहना होगा कि यहां पर स्टॉलवर्ट्स ने एक बेहतरीन वापसी की है. अब ये मैच आहिस्ता आहिस्ता समांतर स्थिति में जाती हुई. It's a very pleasant evening as we move ahead into the night. It's going to be even more pleasant. And under the lights, this ground will even look more beautiful. It will be as beautiful as a newly decked up maiden. It's going to be that beautiful under the lights. This is indeed one of the best grounds in this part of the city. And the new man now. The captain, Suresh. Effortless shot, will have to wait and watch, and the ball will go up and over into the boundary. 40 runs now. शशिकांत गावड़े. चले कम से कम 90 से 100 रनों का लक्ष्य इस टीम के जहन में है. बैटिंग टीम डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा. यह मैच दोनों ही टीम्स के मानसिक धैर्य की सीमितताओं को चुनौती देगा. इट्स ऑल इन द माइंड. इट विल बी अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर. एक बहुत ही विस्फोटक शुरुआत की है टीम SP11 ने, लेकिन यहां पर वापसी करते हुए टीम स्टॉलवर्ट्स. बहुत ही जरूरी है कि मैच में डटे रहे. अगर मैच में डटे रहेंगे तो मैच में बने रहेंगे. You got to stick to your job. The job is cut out for team SP11 and the stalwarts as well. नजाकत से खेला, a touch of class. And he goes for that second and we'll have to wait and watch. No says the umpire. अपील को खारिज किया. 2 रनों की बढ़त, रन संख्या बढ़कर अब 45 रनों पर. 45. वी आर इनटू द थर्ड ओवर. यानी कि 15 के ऊपर की रन रेट के साथ अग्रेसर होती हुई टीम SP11, जो मैच के टॉस को जीतने के बाद बल्लेबाजी का चयन किया था, इस वक्त उस चुनौती पर बिल्कुल खरे उतरते हुए SP11 का टॉप ऑर्डर. काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए राहुल भी अपने टीम का एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है. एक अहम कड़ी है. काफी कुछ राहुल के कंधों पर निर्भर है कि किस तरह से इस महत्वपूर्ण मैच में अच्छा स्पेल करता है राहुल. काफी शॉर्ट और वाइड और कट कर दिया है. डीप पिच एक्स्ट्रा कवर रीजन के क्षेत्र में, वहां पर उस गेंद को रोक न पाए. That should have been stopped with that boundary. The score now on to 50. 50 runs up on the board in quick time.
है मेरे लिए तो दिस इज द डार्क हॉर्स ऑफ द टीम, और जो उनका कप्तान है सुरेश पराडकर, you cannot underestimate him, you cannot take him lightly. SP11 is a dangerous outfit. काफी कम बोलता है सुरेश, लेकिन जैसे ही मैदान पर उनकी टीम उतरती है उनका क्रिकेटिंग नशा सर चढ़कर बोलता है. जबरदस्त टाइमिंग, दैट्स अ फैंटास्टिक पिकअप शॉट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट, निहायत ही खूबसूरत शॉट. 6 रन मिले, 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर. शशिकांत बिल्कुल मन बना के आया है कि मैं विस्फोटक खेलूंगा, बिल्कुल टॉप गियर में खेलूंगा. कप्तान के पास से वो लाइसेंस लेके आए हैं कि पहले गेंद से मैं करारा क्रिकेट खेलूंगा. And yes, in this kind of an 8 overs format, most of the times you've got that license to go for the kill right from ball number 1. At the moment, this team is slightly surprised. Team stalwarts are under pressure. Too wide, too wide. That is the captain. Such a sporting man, this captain Atul. And that is up and over. No chance whatsoever. The fielder in the deep can only be a mere spectator. He can just watch it in awe. What a shot. .63. 2 more balls to come in the 4th over. We have not even reached a half stage. Will this team, SP11, come up with the highest tally in this tournament is the big question. Let's wait and watch. This is a good strategy to be bowling outside the off stump to Siddesh. The supporters of stalwarts on the sidelines are not too happy with the fielding effort at the moment. अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं के काफिले को भी साथ ले चलना होगा अब यहाँ पर स्टॉलवर्ट्स 11 ने, अगर इस मैच में बने रहना है तो. मामला थोड़ा सा पेचीदा होता हुआ. फिलहाल सायन की फिजाओं में केवल एक ही तूफान मचा हुआ है और वो है यूग्रो कैपिटल प्रीमियर लीग. यूग्रो कैपिटल प्रीमियर लीग. Well bowled. They are under big pressure. This will be a test of character for Atul and his team. Very well bowled. Slow through the air into the stumps. What an impressive top order SP11 has. On day number 1, they did not fire on all cylinders, so wasn't such a big target, but they defended the target against Electric Force. 4 over के बाद 66 run, 4 overs, 66 for the loss of 2 wickets. क्या फाउंडेशन ले किया है, रॉक सॉलिड फाउंडेशन, बहुत ही बेहतरीन नींव रखी है. जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा. देखना है कि जीत की बारात में किस टीम के फैंस नाचते हैं, ये देखना होगा. फिलहाल तो पलड़ा काफी भारी है इस वक्त SP11 का. And especially this man, Siddesh Sashikant Gowde is looking smoking hot here.
और इस तरह के प्रेशर गेम में इतना खुलकर खेलना यानी कि टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट दिस टीम इज सच अ गुड टीम. दे हैव planned out a strategy and they are executing the plans to a nicety here. That is team SP11. और ये जो सिद्धेश शशिकांत गावड़े ये कोई हल्का फुल्का नाम नहीं है. बढ़िया टाइमिंग. There is protection in the deep. 68. 4 balls to come in this over number 5. Quite a few shots have been monster hits. They have traveled such a long way into the park. Literally monster hits. And yes, this is easy meat. If you keep bowling in those areas, he will send you packing all day, all night long. 674. इस वक्त ये जो आक्रामक रवैया इख्तियार किया है SP11 ने, ये अतुल पाठक के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ और इसी वजह से चिंता की लकीर इस वक्त नजर आती हुई टीम स्टॉलवर्ट्स पर. चले, ये तो रोकना ही चाहिए था. मिसफील्ड कर गए. आसान से रन्स सौगात के रूप में देते हुए 79. सारे गर्दिश में होते हैं तो हर दाव उल्टा पड़ता है. ये वाला मामला इस वक्त टीम स्टॉलवर्ट्स के लिए. जीत की ऊंची दीवार को लांघने के लिए 100 प्लस का मलबा यहां पर खड़ा करती हुई टीम SP11. 80 रन हो चुके हैं. They have got 8 wickets in hand. That is 80 for 2. Well and truly on their way towards posting the highest tally on the board. Well and truly on their way. And no chance whatsoever. This is easy meat. This is easy stuff. With that boundary. Score at the end of 5 overs, 86 for 2. Yes, definitely team stalwarts have been thrown to the deep end of the sea, and their instinct for survival is really going to be tested here tonight. The instinct for survival when you are thrown to the gallows, that is what will bail you out of trouble. इस वक्त मामला बिल्कुल टेढ़ी खीर बना हुआ है. एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाती हुई SP11. क्या एंटरटेनिंग क्रिकेट खेला है. अब तक का सबसे शानदार क्रिकेट इस टूर्नामेंट में. यस, हमारे प्रजापति गेंदबाजी कर रहे हैं. उनकी एक्शन थोड़ी सी हमें मलिंगा की याद दिलाती है. स्लिंगिंग एक्शन. A red dot ball.
खुशगवार मौसम है, आशा आकांक्षा की लहर लहराती हुई सुमैया के इस खूबसूरत मैदान में। अच्छी शुरुआत की है प्रजापति ने, काफी अनुभवी गेंदबाज है प्रजापति। Yes, each and every match is a learning lesson for any cricketer. Winning or losing is a part and parcel of the game. What matters is your participation, your desire to win. That is more important. Yes, this man is really bowling well. See, that should have been stopped. अच्छी गेंदबाजी को अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो अच्छी फील्डिंग की बैसाखी उपलब्ध करानी होगी. दिस इज वेरी ऑर्डिनरी फील्डिंग. 92. SP11 has come out with the beast mode on. And on the other hand, team stalwarts have really been caught like rabbits in the headlights. वाकई में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, मैच के शुरुआत में लाइट्स, कैमरा, एक्शन, शो टाइम, ये वाली इनिंग्स बिल्कुल शो टाइम है. And yes, that is enough for Wilson to go up and over the head of the man in the deep. One more six, and that is 100 runs up on the board already. That is fabulous. That is stupendous. बढ़िया टाइमिंग. देखिए, फील्ड को भी ठीक तरह से सजाना होता है. जब इस तरह के मूड में डाउन द लेग साइड बल्लेबाज खेल रहे, तो ऐसी स्थिति में एक आधे एक्स्ट्रा प्लेयर को लेग साइड में तैनात करना बनता है. चले 6 ओवर के बाद 104 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी 12 गेंदानी बाकी. अब तक का हाईएस्ट स्कोर इस इवेंट में रहा है 115 रन जो मुंबई गनर्स ने बनाए थे, और उस 115 रन के चलते जो कि पहले राउंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर था, मुंबई गनर्स हैज बिकम द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. तो आज के दिन मुंबई गनर्स नहीं खेलेगी. जिस टीम को पहले राउंड में बाई मिला था, यानी कि ब्लेजिंग 11, दे विल बी प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच टुनाइट, एंड द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स इज टीम मुंबई गनर्स. जीत का कारवा तो निकल चुका है SP11 के लिए, केवल मोहर लगानी है जीत की. Can they take the fight to the enemy camp here? अतुल पाठक and his team. ये कयामत की घड़ी है अब अतुल पाठक के लिए, यानी कि स्टॉलवर्ट्स के लिए. Yes, sir, they are looking the class apart here, team SP11. You got to confess. What a refreshing approach. बिल्कुल एक ताजे हवा के जोके जैसा क्रिकेट खेलती हुई यहां पर. चले, ये तो कयामत को न्योता देने जैसा है इस तरह की गेंदबाजी करना, यानी अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है. That is the half century for Siddesh Gowde. 51 of just 20 balls, 4 boundaries and 4 sixes. क्या बात है, the superstar player. Oh, low full toss, nicely done. That's a very difficult shot to play. Just look at the way he executed that fantastic shot. 115, and they've
jointly become the highest run scorers, the highest team score in this tournament alongside Mumbai Gunners 115. चलिए अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर SP11 के नाम दर्ज होगा ये वाले मैच में। एक बड़ी उड़ान भरी है इस टीम ने और एक नया अफसाना लिखते हुए यहां पर ये टीम एक नया आयाम स्थापित करती हुई। जो भी दर्शक यहां पे मौजूद है इस मैच को देखने के लिए, बिल्कुल एक पैसा वसूल मैच। और मेरी पूरी क्रिकेटिंग करियर में बतौर प्लेयर और कमेंटेटर ये वाला शॉट मैंने पहली बार देखा है। बिल्कुल अजीब और गरीब शॉट, लेकिन 4 रन दे जाएगा। एक 120 और उस छक्के के साथ 126 रन। Silent. Even the organizing committee is wondering as to what's happening. Divankar is enjoying the match. He's got a red t-shirt on. And yes, good evening to the Chief People Officer, Miss Pia Shum. Madam, you've really missed out on great cricketing action. It's worth it that you watch the match on YouTube when you get the time. This is really worth watching. Pure entertainment. This is indeed a Paisa Vasool match. 126 for 2. We've got 7 balls more to come. We make it to 133 with that, 132 with that 6. 132 and Siddesh Gowde is on to 73. And if he goes like this, and if he gets the 99% of the strike, maybe that individual century is up on the cards. You never know. This man can do anything. He can move mountains. देश गावड़े है, यानी कि जो SP11 का जो नुमाइंदा है, आज वाकई में एक सितारा बन चुका है। क्या बल्लेबाजी की है, एक अलग किस्म की रौनक डाली है अपनी इस शानदार बल्लेबाजी के चलते। चले, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करना था, लेकिन ये 4 रन मिले। कोशिश तो की थी कि मैं सिंगल लेके स्ट्राइक वापस दूं, लेकिन 4 रन मिले। 136 रन। अब वो 150 वाला लक्ष्य भी इस वक्त पॉसिबल नजर आता हुआ। Records have been tumbling one after the other. एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया विक्रम दर्ज किया है इस विशाल स्कोर के साथ टीम SP11 ने। They are setting new boundaries. They are breaking the shackles. This partnership is worth 100 runs. Can we give them a round of applause? This partnership now becomes 106. 142 रन, क्या बात है। स्कोरर है श्रवण जकुल, वो बताते हुए कि 8 ओवर्स में इतनी फास्ट स्कोरिंग पहली बार करते हुए अपनी करियर में। चलिए, ये वाइड गेंद होगी और 5 रन मिलेंगे, यानी कि 147।
Deepak is on to 26 of 7 balls. The strike back with Siddesh. Bolo na me. This partnership is more than 100 now, in the region of 110 maybe. Siddesh Gowde is on to 73 of only 25 balls with the help of 5 boundaries and 7 gigantic sixes. The final 3 balls. This is against the run of tide and चलिए देखिए रन नहीं लेना चाहने के बावजूद रनों की सौगात देते हुए और 150 प्लस नो बॉल भी दिया है. चलिए यानी कि अब लेग बाइस क्या 153 153 रन. ये सभी प्लेयर्स के पास काफी कुवत है और इस टॉप ऑर्डर ने वाकई में बड़ी उड़ान भरी है, नया आयाम स्थापित किया है. एक नया अफसाना लिखती हुई टीम एसपी 11. क्या बात है. और ये बहुत ही ज्यादा लंबी गई है. 6 रन मिले यानी कि अब 160 रन हो चुके हैं. Deepak also joining the party. He is on to 33 of just 9 balls. Just look at his strike rate, 366.67. Deepak, Siddesh की strike rate 280.77. कितने सिक्सेस हुए श्रवण अब तक? अब तक 12 छक्के लगे हैं और ये वाला क्या 13वां छक्का होगा, देखना होगा. और ये 13वां छक्का 166. We have lost a count. We have lost a count here, ladies and gentlemen, boys and girls. The 14-6. 172. And yes, the supporters of team Stalwarts cannot believe it. Extraordinary. End of 8 overs. इस मैच को जीतने के लिए 173 रन्स बनाने होंगे. 173 runs to win the match. We will try and talk to शशिकांत. दोनों ही प्लेयर से हम बातचीत करेंगे, दीपक और सिद्धेश से. चलिए.
साइड पर है सिद्धेश, सॉरी सिद्धेश, व्हाट एन इनिंग सिद्धेश, कहां पर ये हुनर छुपाया था और आपके पिटारे से जो शॉट्स निकले वाकई में ऐसा लग रहा था कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू है, क्या कहेंगे? इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग ने बहुत सारा मेहनत किया था, जो कि आज हम लोग ने चेस किया, जो टारगेट दिए है आगे जाके हम लोग और अच्छा टारगेट दे सके। शायद अगले वाले मैच के रन्स भी इसी इनिंग्स में बना दिए। थोड़ा वो प्रैक्टिस था। अगर थोड़ा जल्दी आते और थोड़ी स्ट्राइक मिलती तो शायद इंडिविजुअल सेंचुरी होती और वो अपने आप में एक अलग किस्म का कीर्तिमान होता। सेंचुरी होती, बट टीम के लिए जो स्कोर इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, जो दीपक और मैंने किया है। Thank you. Zabardast innings, and you grow capital will not forget this innings at least till the next season. Thank you. Well played. You played like a champion. And yes, हमारे साथ दीपक है. दीपक, you joined the party at the end of the innings. Initially आपने थोड़ा सा स्ट्राइक देने की कोशिश की सिद्धेश को, लेकिन फिर जैसे आपके शॉट्स भी टाइम हुए तो आप भी खुलकर खेले और जो आपका 325 के ऊपर का जो स्ट्राइक रेट था बहुत ही जबरदस्त था। वही था सर प्लान कि सिद्धेश अच्छा बैट पे बॉल ले रहा था, तो वही था कि उसको स्ट्राइक ज़्यादा दूँ, और वो तो वैसे भी मेरे को कुछ बॉल दे रहा ही नहीं था खेलने को, वही अकेले ही खेल रहा था। जो भी मेरे को बॉल मिला मैंने ट्राई किया कि स्कोर करूं, और हम दोनों का वही मोटिव था कि टीम के लिए जितना स्कोर करेंगे वही है। और हम लोग ने पहले मैच में हम लोग का बैटिंग थोड़ा वीक हो गया था, तो वही सबको हम लोग को एक मतलब बैटिंग हमारी शो करनी थी कि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या है, तो बैटिंग भी हमारी ये मैच से हम लोग अभी स्कोर तो ज़्यादा हो गया, अब नेक्स्ट मैच में और अच्छा खेलने को देखेंगे। थैंक यू। चले, थैंक यू, वेल प्लेड। और वाकई में कहना होगा कि आपने जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगले 1 मिनट में ये सेकेंड इनिंग यहां पर शुरू होगी। थैंक यू। अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, Round directly from their workplace. And yes, today it's a good attendance and under the lights. This will be quite a pleasant evening. And even the fans and supporters gathered on the sidelines will really enjoy the play tonight. And yes, of course, tomorrow. Good evening and welcome back to the second half of the first match between the SP11 and the Stalwarts. A mountain to climb, 173 to win the match. Atul Patak and Bhavesh Doshi at the center page to try and get as close as possible to the target. At the moment, there is no need for Team Stalwarts to even look at the scorecard. They just need to play positive cricket. They just need to enjoy the game. और यही मंशा होगी कि इस गेम को यानी कि अब आने वाली 8 ओवर्स को एंजॉय करें।
in spite of being the positivity vaccine Patak for his team, it's going to be difficult for even somebody like Patak to make sure that his team is really positive till the very end. Off the mark, Atul with a single. Kaustubh is bowling from the combox end, the opening over. And yes, the batters have been in good form and the bowlers really need to be right on the money. They need to gather some good practice under the belt before the semi-final. So yes, it's very paramount that even the bowlers have that they have some good practice before the semi-finals. To win the championship trophy, the batters, the bowlers and the fielders will have to play like a cohesive unit as a team to win that championship trophy. You got to play like a cohesive unit. Each and every part of the machinery has to be well oiled. Four for no loss at the moment. Fantastic shot and up and over. अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए यहां पर अतुल के बल्ले से पहला करारा छक्का पहले ही ओवर में. That will take his confidence skyrocketing. Yes, they are wanting to play the natural game. It's good to see. Need not look at the scorecard, just need to enjoy the 8 overs, play their aggressive cricket, play their natural game. Need not take pressure off the mountain to climb. कौस्तुभ टीम SP11 की बॉलिंग ब्रिगेड की एक अहम कड़ी है और बिल्कुल रंगत में आकर उजागर होकर गेंदबाजी करनी होगी इस पूरे टूर्नामेंट में. इस मैच में अगर इस मैच को जीतते हैं तो फिर कल वाला जो सेमीफाइनल है Vaibhav in the deep. The last ball to come in the first over. That's the over. तेरह रन पहली ओवर की समाप्ति पे. नॉट बैड.
And yes, he gets clean bowled to the very first delivery. The captain on his way back to the hut. Stalwarts knows the result, but still they are all smiling, they're enjoying, they are happy for the success of SP11 as well. That is well timed, but straight to the man in the deep. Only a single added. That single takes the score to 13, 13 for 2. Yes, the floodlights have been brought on, and very soon it will be full throttle, the floodlights. So presently we are going to the twilight time. That is the most difficult time to spot the ball. A 15 for 2. बड़े रनों की पाइपलाइन को काटा हुआ है, केवल औपचारिकता इस वक्त मार्गस्थ है, जबकि दूसरा ओवर शुरू है, एक गेंद आनी बाकी है, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर. Low full toss, well timed. There is a man at backward square leg. That single will take the score to 16 at the end of 2 overs. 157 to win of 36 balls. That is the equation. This is only season number 1, but still I have a gut feeling that this record will maybe never be broken.
Yes, we can see quite a few employees and personnel reporting for this match, and I'm sure that they will be enjoying the evening. और एचआर डिपार्टमेंट ने तो ये शाही फतवा जाहिर किया ही होगा कि आज और कल कल तो बिल्कुल अटेंडेंस फुल 100% होनी चाहिए. Yes, they are looking a good, robust group with the Mumbai team of Ugro Capital. There already seems to be such a good, robust bond, and post this tournament, that will be even more strengthened. So that's the whole motto. कौस्तुभ बहुत ही जरूरी है कि अच्छी लय में हो सेमीफाइनल मैच के पहले. बल्लेबाजी ने तो बल्लेबाजों ने उनका करिश्मा कर दिखाया है, लेकिन गेंदबाजों ने भी बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करनी होगी. इट्स अ टोटल टीम एफर्ट. सो यस, they have to be in sync, each and every player. Each and every player will have been assigned a key role tomorrow for the semi-finals, and they got to perform their role to an ICT. Only then they can grab their hands on that beautiful lady, the championship trophy. One more wide. ये थोड़ा सा चिंता का विषय होगा सुरेश पराड़कर के लिए. सुरेश पराड़कर का पूरा ध्यान कल के सेमीफाइनल की तरफ लगा हुआ है. His mind is working overtime. कहना होगा कि ये अहम कड़ी साधारण कड़ी नजर आती हुई आज. कौस्तुभ. Yes, he's a much better bowler than this. The score at the end of 3 overs is 25 for 2. Good evening and a warm welcome to the Ugro Capital Premier League Season 1. This is the Mumbai leg. This tournament is being played simultaneously across 7 metro cities and 3 other cities.
27 for 2 at the moment. That is nicely played, and yes, that will be just what the doctor ordered. That's a no ball, and 7 runs added. That 6 comes off the blade of Bhavesh. That's a no ball. કેતન મને કોલ કર કાલે શેટ્ટી સાહેબે પોઈસર જીમખાનામાં બોલાવ્યા છે 9:30 વાગે તો જે તમે 4-5 લોકો આવવાનું હોય એ આવજો 9:30 વાગે પોઈસર જીમખાનામાં મને કોલ કર તારો ફોન આઉટ ઓફ નેટવર્ક આવે છે કેતન તારો ફોન આઉટ ઓફ નેટવર્ક આવે છે કાલે શેટ્ટી સાહેબે તમને 9:30 વાગે સવારના પોઈસર જીમખાનામાં બોલાવ્યું છે મને કોલ કર. Yes, we'll have to wait and watch. At man trying to get under. Another ball nicely taken. Yes, the second match slated on the schedule tonight is the Volcano Warriors versus the Warriors 11. इसके बाद वाला मैच Volcano Warriors versus Warriors 11. (39 for 2 after 4). 24 balls and 134 runs to win the match. Just going through the motions. Yes, tonight SP11 was a class apart. They were too good.
still put at the wicket. Yeah, that is into that deep mid-off region. The bowler bowling his second over, that is Ritesh. Bhavesh Doshi is on to 16 of 17 balls with the help of one boundary. 47 for 3. Clean bowled. Bhavesh on his way back. That was almost in the block hole. Yes, Go Capital is very disciplined with everything, and we have to make sure that we put all the waste, the garbage in the dustbins. Thank you. Yes, especially the water bottles. The empty water bottles have to be put in the bin. The new man in Keshav. छह ओवर के बाद 49 रन, 49 for 4 after 6. The final 12 balls to come. The next match of the evening, Volcano Warriors versus the Warriors 11. That's it. Nice catch taken. Straight down his throat. That is Vaibhav. He takes the catch quite comfortably. Makes it look so easy. Half the team back in the hut.
Yes, it's toss time, match number 2, day number 3. This match will decide the third semi-finalist spot as far as the Mumbai leg of the Ugro Capital Premier League is concerned. We have with me the toss boss, Mr. Vinay Jadhav, head admin and infra. He will flip the coin. The two captains, Manoj Shinde and Prashant Lad. Who is going to take the call? Who will take the call? It's going to be the Volcano Warriors, Manoj to take the call. Toss time. Heads is the call from him and it is tails. Yes, Prashant, तुम्ही या ठिकाणी टॉस जिंकलेला आहे. आपण काय घेणार आहात, फिल्डिंग की बॉलिंग आणि का? अतिशय महत्वाची मॅच आहे, प्रेशर गेम आहे. म्हणजे ही मॅच जे कोण जिंकणार सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. कमी स्कोर जितका कमी स्कोर होईल तितका आमच्या टीमसाठी थोडं चांगलं राहील. Yes, the news from the center is that Team Warriors have won the toss and they have decided to bowl first. पहले मैच में भी उन्होंने अपने लक्ष्य को चेस डाउन किया था, पहले गेंदबाजी की थी. मेरे साथ वॉरियर्स के प्रशांत है. प्रशांत, आपने भी पहले मैच में गेंदबाजी का चयन किया था. मनोज, यस, तो आप हैप्पी टू बैट फर्स्ट? नहीं, हमारा एक्चुअली फिलहाल था कि हम पहले बॉलिंग करें. हमारा पहले डिसीजन वैसा था कि हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे करके बॉलिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने टॉस जीत लिया. अभी हमारा वाला कॉल उन्होंने ले लिया है. कोई बात नहीं, हम लोग ने जैसे SP11 का गेम देखा है बैटिंग का, सो हम ट्राई करेंगे कि हो सके उतना ज़्यादा रन हम लोग स्कोर कर सके और उनको अच्छा खासा एक टारगेट दे पाए. Yes, thank you, and here's wishing both the teams the very best. Prashant Lad and Manoj Shinde, the captains will pose for a photograph. पैसे का आप भी टेंशन मत लो. यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी. इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं. अरे सर, पैसे नहीं है. मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा,
पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. Beautifully decked up maiden. ये दूधिया रोशनी में ये मैदान और भी निखर कर नजर आता हुआ, and I'm sure yes all the players will enjoy the game as far as the matches under the lights are concerned. Yes, can we have SP11 and stalwarts in front of the presentation area? Yes, good evening and welcome to the post-match prize distribution. All awards was concerned. Round of applause to the winning team SP11 for that mammoth victory. And I'm sure that our guest of honor, Chief Legal and Compliance Officer, Mr. Sunil Lotke, will be a little worried with the kind of batting that these guys dished out. So tomorrow we have a match on our hands. It's not going to be easy. That is great for the tournament. Yes, and straight away we get started with handing over the Man of the Match award. And to collect the award, it is Siddesh Gowde, 73 runs, 5 boundaries, 7 sixes of only 26 balls. And Mr. Sunil Lotke, the Chief Legal and Compliance Officer, doing the honors. Thank you so much. Yes, you all got to come center stage. Congratulations, a terrific innings, a gem of an innings. And yes, nobody will forget this innings for quite a long time. Siddesh, congratulations, well done. You deserve this Man of the Match trophy. और अगर ऐसी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अगर कल भी मिलती है सेमीफाइनल में तो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी।
ज़रूर सर, नेक्स्ट मैच के लिए हम लोग ट्राई करेंगे और जो भी मेहनत किया हम लोगों ने, टीम ने सपोर्ट किया है, उसके लिए बेस्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, जोरदार तालियां मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर के लिए। अब रुक करते हैं वोल्केनो वॉरियर्स और वॉरियर्स 11 की तरफ। Yes, still early days in this match. The Volcano Warriors versus the Warriors 11. Warriors 11, having won the toss, have decided to bowl first. The batting pair of Manoj and Brijesh at the wicket, and it is Vijay bowling. That has really travelled quite a distance in the air. A good effort by the fielder, but cannot hold on to the ball. Yes, the two semi-finalist teams so far in the Mumbai leg of the Ugro Capital Premier League Season 1. Mumbai Gunners, led by Sunil Lotke, and SP11, led by Suresh Paradkar. The first two semi-finalist teams. This match will decide the third semi-finalist team, and the match after this, Rising Phoenix versus Blazing 11. The winner makes it to the semi-final. पहले ओवर के बाद रन संख्या केवल 4 रन, और कम से कम 70 के उस पार जाना चाहेंगी ये बैटिंग टीम। ये दोनों ही टीम्स ने अपना पहला राउंड मैच जीता था, और इस पहले मैच को जीतते वक्त दोनों ही टीम्स ने चेस डाउन किया था। तो पहली बार वोल्केनो वॉरियर्स पहली बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल हर्ष उल्लास का वातावरण, खुशगवार मौसम है, और दूधिया रोशनी में ये मैदान और भी खूबसूरत नजर आता हुआ। टेनिस क्रिकेट के लिए सबसे बढ़िया ग्राउंड ये। लश ग्रीन आउटफील्ड, एक जबरदस्त बैटिंग विकेट, फ्लड लाइट्स। ऑल क्रेडिट टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ यूग्रो कैपिटल फॉर हैविंग ऑफर्ड सच wonderful facilities to their players. And yes, this event conducted by Zuter, Mr. Sushrut and his team. पहला वाला ओवर काफी किफायती था विजय की तरफ से, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन दिए विराज, और दूसरे अब छोटेलाल गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी है कि पहली गेंदबाजी करते हुए कम से कम लक्ष्य तक बल्लेबाजों को बांधे रखे। एंड दूसरी तरफ द बैटिंग टीम विल बी लुकिंग टू पुट ऑन एज मेनी रन्स एज पॉसिबल इन द फर्स्ट इनिंग्स टू पुट द प्रेशर ऑन द फील्डिंग टीम। 3 balls to come in the second over. It is 8 for no loss. कर हर मैदान फतेह, ये यलगार पुकारी है दोनों टीम्स के कप्तानों ने। हम लोगों ने देखा था कि कल के दिन टीम राइजिंग फिनिक्स लेड बाय आदित्य शाह रियली प्लेड सम फैंटास्टिक क्रिकेट, और पहली बार हम इस टूर्नामेंट में देखेंगे ब्लेजिंग 11 को। इट्स अ प्रीटी अननोन एंटिटी, क्योंकि उनको पहले राउंड में वॉकओवर मिला था। तो देखना होगा कि ब्लेजिंग 11 की टीम के पास किस तरह का क्रिकेटिंग मटेरियल है।
So ये थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा ब्लेजिंग 11 के लिए कि राइजिंग फिनिक्स does not know what kind of cricketing material ब्लेजिंग 11 has. और राइजिंग फिनिक्स का मैच यूट्यूब पर बिल्कुल देखा होगा ब्लेजिंग 11 ने. The scoreline at the end of 2 overs is only 9 runs. But the good news is that they've got all 10 wickets in hand. So yes, it's time for the batters to shift gears here. The bare minimum that the batting team wants to have on the board is something in the region of at least 65 plus. Batting first, Volcano Warriors after losing the toss. A good start for Warriors 11 led by Prashant winning the toss and opting to bowl first. A steady start here. Quite some cricket left to be played. Yes, so this is a very important match here for Volcano Warriors and Warriors 11. Nicely timed, gets into a good position, picks up the length of the delivery quite early. Well timed, but there is protection in the deep. Yes, that is just what the doctor ordered. Important. 4 runs added, 18 for no loss. On the pedal, something in the region of 65-70 is what they would be wanting on board so that they can get to a respectable tally. Two good teams up against each other.
The score at the end of 3 overs, 19 for no loss. चले एक ठीक ठाक नींव रखी है. अब जरूरी है कि टेम्पो को शिफ्ट करे, टॉप गियर में खेले, क्योंकि वक्त का तकाजा यही कहता है कि अब थोड़ा सा खुलकर खेले. सभी विकेट्स हाथ में है, अच्छी नींव रखी है, क्योंकि वॉरियर्स 11 के पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है. उस लिहाज से उस बैटिंग लाइनअप को टेस्ट करना है तो कम से कम 60 से 65 रन चाहिए स्कोरबोर्ड पर. कुल मिला के अब 30 गेंद आनी बाकी है इस इनिंग्स में, और इन 30 गेंदों में 50 से 55 रन बनाने होंगे. Yes, at least 45 to 50 runs in the next 5 overs. इसके पहले वाले मैच में हम लोगों ने एसपी 11 के बल्लेबाजों की तरफ से आतिशबाजी देखी. बल्लेबाजों ने इस मैदान पर एक अलग रौनक डाली थी एसपी 11 के टॉप ऑर्डर ने. काफी अच्छी संख्या में सभी यूग्रो कैपिटल के पर्सनल यहां पर मौजूद है. दे आर एंजॉयिंग द प्रोसीडिंग्स. Almost a nothing shot, and yes, nicely taken. The first wicket falls, and Manoj on his way back to the pavilion. Back in the hut. Now 2 balls to get his eye in, try and gauge the wicket. But yes, his primary job will be to provide that much required impetus to this innings. He will have to play his natural game. Down the leg side will be a wide one. Yes, they need to make sure that they do not gift any extra runs. They have to be right on the money. No charity on offer. You got to be ruthless in your approach. This is the big game. The team that wins this one clinches the spot in the semi-finals. So this is a huge match, the big one. Tomorrow evening is going to be the super night that will decide the champion team of the Mumbai leg of the Ugro Capital Premier League Season 1. And yes, one more man bites the dust. He gets clean bowled. Both the opening batters back in the hut. This is the good start here for Team Warriors 11, winning the toss, opting to field first. नंबर 4 के क्रूशियल स्थान पर अमय गवली अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं. अब पूरी तरह से दारोमदार प्रदीप और अमय के मजबूत और सक्षम कंधों पर हाथ थमा हुआ है कि किस तरह से अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक ले जाए, किस तरह से अपनी टीम की नैया पार लगाए. देखना है कि कौन सी टीम जीत के नाव पर सवार होती है. बहुत ही बड़ा मैच है ये वाला. ये सेमीफाइनल मैच की आपकी पोजीशन को तय करेगा ये मैच. और ये हवाई यात्रा पर गेंद निकली थी. भाग्यशाली रहे बल्लेबाज
कि नो मैंस लैंड में गिरी, कोई भी खतरा नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महफूज। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। शिकंजा कसा है वॉरियर्स 11 ने, बिल्कुल थामे रखा है ये दोनों ही बल्लेबाजों को। They have put the batters on a tight leash here, not letting the batting team get away with a big score. बड़े रनों की पाइपलाइन को काटा हुआ है टीम वॉरियर्स ने। They are bowling in the right areas. No freebies on offer. End of the fourth over. Only 25. Somebody needs to shift gears here. It's time to play the big shots. It's time to break the shackles here. This is the big game and you need at least 60 runs on the board. You are up against such a good team like the Warriors. And to put them in a spot of bother, you need at least 60 runs on the board, isn't it? (27) Yes, I'm sure that both these batters will exhibit a sense of urgency. This is going to be a test of character. एक अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई ये दोनों ही टीम्स, कयामत की शाम है टीम वोल्केनो वॉरियर्स और वॉरियर्स 11 के लिए. The team that is more stronger in the mind will have that big chance to win this one. It's all in the mind at this stage. A good shot on the rise. We'll have to wait and watch. There is protection in the deep. Only a single added, and that single takes the scoreline to 28. And that is an answer. We'll have to wait and watch. A man trying to get underneath it, but cannot get there. The ball was too much in the air. It was swirling in the air. Difficult to catch it. So we do not want to be too harsh on the fielders. But yes, that was a half chance. A little short of the wicketkeeper there. And he has a shy at the striking end and one extra run added. Smart running between the wickets. Volcano Warriors starting to erupt here. They have to erupt like a volcano. They have to live up to their name. They got to do something extraordinary out here now. Just a single. 33, the final ball to come in the fourth over. At the moment, the run rate is just a little more than 6 and over, a fraction more than 6. Dot ball ends the over. 5 overs, 33 for 2. That's the story so far. The final 18 balls to come, and in these 18 balls, they will be looking to add at least 25 to 28 runs. Something in the region of 60 could be a fighting total. You never know. How many runs are enough? You never know. Especially looking at the scenario wherein we saw 172 runs being put on the board by the SP11. So you do not know what kind of a total is going to be enough. But 60 is the bare minimum. आज के दिन का आखिरी मैच राइजिंग फिनिक्स बनाम ब्लेजिंग 11.
अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. Boundary, just what the doctor ordered. 38 for 2 into the 6th over. 4 balls to come. A total of 16 balls left to come in this innings. 38 for 2. Can they get to something in the region of 60 is the big question here. Thirty-eight for 2. With that single, 39. Straight to the man at Whitish mid on 43 for 2 now with that single. Yes, they are starting to play a little robustly now. Runs starting to flow in. 43. 44, and with that single, it will now be 45. 45 for 2. They have got wickets in hand. 8 wickets in hand. End of the 6th over. The final 12 balls to come now, and they will be looking to put up at least 18 to 20 runs. When you've got 8 wickets in hand, you should be looking to put the foot on the battle, looking to break the shackles and clear the boundary line.
What a fantastic shot. That is really what was required. The need of the hour. 50 runs plus on the board. 52 for 2. Stitching a good partnership. They are starting to look good. They need to end this innings with a flourish. They need to clear the boundary rope at least 2 to 3 times in the remainder of the deliveries. At least a couple of boundaries or maybe a 6 or 2. Maybe that second run was on the cards. That first run had to be taken quite swiftly. Only a single added will take the score to 53. 2 balls to come in the penultimate over. यानी कि अब कुल मिला के 8 गेंदबाजी बाकी है इस इनिंग्स में और रन संख्या 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी रंग लाती हुई प्रदीप और अमय के बीच। चले ये बैकफुट पर एक करारा शॉट खेला है, बेहतरीन टाइमिंग, जबरदस्त ताकत, काफी ऊंची गई और लंबी भी गई। 6 रन मिले, 59 रन। Once again, such a good connection. The fielder can only be a mere spectator. They have broken the shackles here. They have shifted gears. यह आतिशबाजी नजर आती हुई विशेष रूप में प्रदीप के बल्ले से 65 रन हो चुके हैं। वाकई में कहना होगा कि एक सम्मानजनक लक्ष्य तो अब स्कोरबोर्ड पर नजर आता हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रन्स बटोरने होंगे। पता नहीं किस तरह का लक्ष्य ये क्वालिफायर मैच में बिल्कुल इनफ होगा, क्योंकि वॉरियर्स के पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। 7 ओवर के बाद 65 रन, आखिरी 6 गेंदबाजी बाकी। Oh, the ball has enough gas on it to go over the man in the deep. 6 more runs added. What a fantastic rear guard action by Volcano Warriors. They are starting to erupt like a volcano. A little too late in the day, but yes, welcome runs being added here. This is quite the right approach here. Want to be adding as many runs as possible. This is the big game. Well struck, a good clean strike, a good bit of work by the man in the deep. That second run needs to be taken, and the batsman was too slow to get off the blocks taking that second run. That strike had to be given back to Amay. वो अब यहाँ पर टूटी है और अंपायर के सिग्नल की प्रतीक्षा करते हुए वाइड गेंद का इशारा। एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा, रन संख्या जहां पहुंचती है उसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ 73 पर।
3 balls to come. आखिरी 3 गेंद आने बाकी इस इनिंग्स में. Volcano Warriors misses out, trying to step out and get to the pitch of the delivery. They need to put bat to ball. Mandar will be looking to give the strike back to Amay. I mean, he will be trying to play the big shots himself. Not able to put bat to ball. In the dying stages, there is middle to thread now. The final ball, the strike back with Amay Gavli. Amay Gavli is on to 27 of 13 balls. And yes, they are trying for that second run. They make it home comfortably. 79 runs to win the match. A good score, a fighting total on the board. Yes, they have got a cushion of 79 runs. A good score to defend. 79 runs to win is the set target. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं. अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा. पैसे का आप भी टेंशन मत लो. यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी. इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं. अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा. Thank you.
पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. This is day number 3, match number 2 as far as day number 3 is concerned, and overall this is match number 8. The Volcano Warriors versus Warriors 11. Warriors having won the toss had opted to bowl first, and now the set target for the Warriors is 79 to win this one and make it to the semi-finals. The team that wins this match makes it to the semi-final. The two semi-finals and the grand finale at the same venue tomorrow. Yes, 5:30 the match starts tomorrow. Oh, that should have been taken. That was straight down his throat. That catch could have been taken even with closed eyes. How could he miss that one? Chotelal gets a life to the very first delivery that he faces. He'll have to try and take advantage of that one. The bowler, Kaushik Rathod, Nishant now on strike. That was a regulation catch, and because he's standing in that point area, I'm sure that he must be one of the better fielders as far as the fielding team is concerned. Yes, warming up on the sidelines, Rising Phoenix and Blazing 11. Both the teams are already present here. Not such good timing. One bounce straight to the man in the deep. Yes, not a mountain to climb, but definitely a challenging ask. This match has got the potential to go right down to the wire. This will be a close match. Too short, left arm round the wicket, Kaushik. Kaushik needs to pitch the ball further up. He is quite an experienced bowler, one of the key links for the Volcano Warriors. If they have to defend this total, each and every bowler needs to perform his job to a nicety. This is well bowled, slower through the air, well up to the batsman. Not much conviction in that appeal, just going through the motions. A 4 for no loss, 3 balls to come in the first over. Still early days, quite some cricket left to be played in this one. This is the Mumbai leg of the Ugro Capital Premier League Season 1. Technology focus. Has a shy at this stump. He had all 3 stumps to aim at. Could not uproot the stumps. 5 for no loss. Everything happening out there. Quite an eventful first over.
The ball falling in no man's land. The ball was hovering up in the air around Manoj. End of the first over, 6 for no loss. A quiet and sedate start here. 73 runs to win the match. 67 to win off 7 overs now. 42 balls and 63 runs to win the match. The required run rate exactly 9 and over. You have to be strong in the mind. This is going to be a test of your temperament, a test of your character. Bhavesh now to bowl. Quite slow to the edges, releasing the ball into the stumps. Straight to the man at the edge of the circle. Ample time for the batsman to scamper home for a single. They need to make sure that they hardly play any dot balls. And whenever there is a loose ball on offer, you got to go after it. This is a better line. And that's a bye. They literally stole that run away. Yes, Bhavesh is somebody who will not try and bowl express pace. His main job is to just keep bowling wicket to wicket, not give any extra pace to the batters to work him around with. Well played with a cross bat, up and over she goes. We'll have to wait and watch, and that is just what the doctor ordered. Breaking the shackles here, Chotilal Yadav with that blazing 6. The scoreline now 14 for no loss. Putting the foot on the pedal here, looking to accelerate. When the going gets tough, the tough get going. Come at the hour, come at the man. Can Chotilal deliver the goods here? This time outside the off stump. The umpire had one good look at it. 1.4 overs, 14 runs, all wickets in hand. Trying to lay a good foundation. एक अच्छी नींव रखते हुए that will be the end. He will make no mistake. That's a regulation catch, and on his way back to the earth is Chotilal. इनिंग्स के लिए छोटेलाल ने पेविलियन में वापस आसान सा कैच, एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया भावेश ने. इसी विकेट की खोज में थे टीम वोल्केनो वॉरियर्स. बिल्कुल समांतर स्थिति में यह मैच है. उस विकेट के चलते थोड़ा सा मोमेंटम इस वक्त शिफ्ट होता हुआ वोल्केनो वॉरियर्स के पक्ष में. हल्का सा, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है इस वक्त. भविष्यवाणी करना यानी कि खतरे से खाली नहीं, अनिश्चितताओं का खेल है. इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. Only a foolish man would predict the outcome of this kind of 8 overs a side qualifier match. Two good teams up against each other, well balanced both the teams.
that ball which was into the stumps, into that backward square leg region. 16 for 1. Starting to put the speed breakers on here, Volcano Warriors. They're bowling a good tidy line and length, just making sure that the ball lands in the right areas, making life a little difficult for Warriors 11 here. Each and every dot ball will take that pressure mounting. 16 for 1. We are into the third over. 4 balls to come. Yes, still early days. You never know. Well timed. The ball is traveling at good speed. 1 bounce to the man at a deep mid wicket. Good bit of work. That will run away to the boundary. No need to run for that one. That had a boundary written all over it in bold letters. DJ. .27 for 1. The run rate and a fraction more than 9 and over. Not bad at all. Just about what is required, but they will be looking to try and maintain that same tempo without losing any further wickets. 3 overs, 27 for 1. The match is in the balance here. Not a bad start at all. Looking at 27 runs on board, having lost just 1 wicket. So yes, this match could go either ways. बिल्कुल समांतर स्थिति में है ये मैच. इवन स्टीवंस nicely taken. What a catch. He just remained cool and composed, and he pouches that without making a mistake. DJ.
Well bowled. He is bowling quite slow, not giving any extra pace to the batters. He's maintaining a good line and length. He's sticking to his basics here, the captain Manoj. Keeping things simple. Too short, we'll have to wait and watch. Pierce is the two-man in the deep, just what the doctor ordered. DJ. (31). Once again, quite short and well pulled away. The same result. Consecutive boundaries to Warriors 11. And yes, this man has cut loose here. Mayur Patole has cut loose here. He is breaking the shackles. He is looking to take the fight to the enemy camp. He is playing like a lone ranger. Well played, Mayur. 42 for 2 at the end of 4 overs. यानी कि अब 24 गेंदों में 37 रनों की दरकार. 24 balls, 37 runs to win the match with 8 wickets in hand. Yes, slowly but steadily starting to get into the driver's seat. Quite some cricket left to be played. This over is going to be a very crucial over as far as the Volcano Warriors is concerned. The next 2 overs will have to be bowled by their very finest bowlers. Four, and it is the new bowler Brijesh. Well timed, just helping it on its way over the head of the man in the deep. That's a blazing 6. Is playing a blinder here. That is superb batting. Yeah, they steal that single away. We'll have to wait and watch. Had a shy at the strikers and but no harm done. 1 run added. 49 for 2. Yeah, they're nicely building the innings.
They laid a good foundation. They have wickets in hand, and now both these batters looking to flourish. They have shifted gears here. They have started to accelerate here. Just the kind of approach that was required. Quite matured in their approach, Team Warriors 11. Test of character for the bowling team here. They have their back up against the wall. One bounce to the man at deep square leg. 50 runs up on the board for Warriors 11. 50 for 2. That is a belter of a shot. It clears the boundary ropes by at least 6 to 8 yards. Will put the fielding team in a spot of bother. That will be a huge relief in the camp of the team batting here. That's 6 of the last ball. 58 for 3. The equation is 18 balls and 21 to win. This is easy, mate. This is not done. $62 for 3 now. 17-17. सोलह चेंडू आणि धावा पाहिजे ते 16 गेंदों में 16 रनों की जरूरत और 7 विकेट्स अभी भी शेष है. Yes, they have been quite clinical in the chase. They know what they are doing out there.
They're playing to a plan. But that will have to be the final nail in the coffin. That 6 will really be the turning point. Oh, he had a chance. He did well to get there. Unfortunately, could not hold on to the ball. That's a boundary. With that boundary, the score now on to 73. A red dead ball, dot ball against the run of tide. 73 for 3. Just 5 more to win. 6 more to win. 6 of 13 balls. And that will be it. It's all over. Congratulations to Warriors 11. Well played, Siddesh. Siddesh really delivered the death blow. What a fantastic cameo he played. Takes his team to a convincing victory. The journey for Volcano Warriors ends here. And Warriors 11 into the semi-finals. Over to the DJ. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो। यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow.
अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा Evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Yes, according a warm welcome to the founder and vice chairman cum managing director of the Ugro Capital, Mr. Sachindra Nath, sir. Good evening, sir, and a warm welcome. We get to the center pitch for the toss of the final match of day number 3, that is Rising Phoenix and Blazing 11. May I have both the captains for the toss at the center pitch? Alongside Mr. Sachindra Nath, we have got Ms. Priya Shom, the Chief People Officer, and Mr. Sunil Lotke, the Chief Legal and Compliance Officer. And yes, I'll request both the captains to please get to the center pitch for the toss. The toss will happen at the hands of our founder and vice chairman cum managing director, Mr. Sachindra Nath. Good evening, sir, and a warm welcome. It's great to have you here. Your presence will definitely be a big source of inspiration to the players playing this next match. Both the teams need to get behind Mr. Sachindra Nath. सर के पीछे जाइए दोनों ही टीम्स. कैप्टन्स यहाँ पर रहेंगे. With me the captain of Blazing 11, that is Sanjay, and the captain of Rising Phoenix, Aditya Shah. Both the captains in all readiness. Mr. Nath to flip the coin. Who's going to take the call? एक मिनट. Yes, toss time. Heads is the call from Aditya. We'll wait and watch. It is still. संजय, आपने इस मैच के टॉस को जीता है. आपका निर्णय क्या है और क्यों है? हम फर्स्ट में बैटिंग करेंगे, तो हमने बैटिंग चूज की है. मिनिमम 120. क्या बात है, एक सकारात्मक निर्णय. और आपने अब तक एक भी मैच नहीं खेला है, तो यू आर स्लाइटली एन अननोन एंटिटी. एक शायद एक एडवांटेज होगा. किस तरह की तैयारी की है आपकी टीम ने? एक्चुअली हमने ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं. हाँ सर, राइट. फाड़ के रख देंगे. क्या बात है, नाथ सर की प्रेजेंस के चलते एक एक्स्ट्रा जोश नजर आता हुआ. आदित्य, हैप्पी टू बी bowling first? Absolutely. He is a very positive character. Yes, so what's the kind of excitement in your camp? So at bat first in the first match, and team performed well. So this would be a challenging task at this stage. So it is better we chase. So yes, all set. Before we move forward, I'll request Mr. Sachindra Nath sir to please say a few words that will really inspire one and all. The only thing is that one would phado, one would be todo, and we will watch that. Thank you very much. Thank you so much, sir. We get into the presentation arena for the Man of the Match award. Yes, a group photograph of both the teams with Nath sir. Yes, the news from the center is that Blazing 11 has won the toss and they are going to be batting first.
Yes, I'll request Team Volcano Warriors and Warriors 11 to please come in front of the presentation arena for the post-match presentation. I'll request Mr. Sachindra Nath sir along with Priya Shom madam and Mr. Sunil Lotke to please come into the presentation arena. Yes, may I request both the teams to please make their presence felt. चलिए वॉल्केनो वॉरियर्स और वॉरियर्स दोनों टीम्स अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा And yes, congratulations to Team Warriors 11 for winning this important match and clinching their berth in the semi-finals. It's going to be a wonderful final day here at the Somaya ground, especially playing under the floodlights. That is going to be a very, very good experience for one and all. And yes, to collect the Man of the Match award, may I request Sachin Nath sir to please do the honors. And the Man of the Match award goes to somebody who scored 24 runs off 6 balls with 3 sixes and 1 boundary. That is Siddesh Nadar. I don't know whether he's nervous or confident. पता नहीं, जैसे सचिंद्र नाथ सर को देखा बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं क्या हो रहा है. चल रहे, congratulations, well done. सिद्धेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड. बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए और इस इनिंग्स के चलते चले सिद्धेश अभिनंदन. खऱ्या अर्थाने अतिशय महत्वाच्या मॅच मध्ये तू मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड जिंकलेलास आणि हाच मोमेंटम, हेच फॉर्म तुला उद्याच्या दिवशी सेमीफायनल मध्ये त्या ठिकाणी दाखवावं लागणार, जेणेकरून उद्या ग्रँड फिनाले जर तुझ्या टीमनी खेळायचंय तर तुला अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडायची आहे. हां, ते मी महत्त्वाची भूमिका पाळेन आणि उद्याचा माझा टोटल असेल इंडिव्हिज्युअल टोटल ॲटलिस्ट 50+ जाईन मी पण. हा ट्राय करेल. आमचा इंडिव्हिज्युअल स्कोर माझा 50, टीमचा 150. समोर त्यांनी फक्त घाबरून राहा बस. तुला माहिती आहे ना, तू सचिंद्र नाथ समोर सर समोर हे सर्व बोलतोय, तुला माहिती आहे ना. चला ठीक है, एकदम पॉजिटिव है, वेल डन, कंग्रेचुलेशन. चलिए रुक करते अब आखिरी मैच की तरफ, बैक टू द क्रिकेटिंग एक्शन ऑन द ग्राउंड. थैंक यू सचिंद्र नाथ सर, थैंक यू सो मच. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा कैपिटल प्रीमियर लीग सीजन 1. आप अंदाजा लगाइए कि सीजन 1 अगर इतना शानदार है तो किस तरह से अंजाम होगा और आने वाले दिनों में किस तरह का यूग्रो कैपिटल प्रीमियर लीग रंग लाएगा, ये देखना होगा. ब्लैक के कैप्टन संजय.
All set for the final match of day number 3 to get underway. The umpires having one final look at the proceedings. It's all set. Lights, camera, action, showtime. क्योंकि इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच खेल रही है ब्लेजिंग 11, पता नहीं किस तरह का हुनर उनके पास है, किस तरह की प्रतिभा है। देखना होगा कि किस तरह से इस महत्वपूर्ण मैच में अपनी टीम की नैया पार लगाते हैं टीम ब्लेजिंग 11। गेंदबाजी करते हुए सिद्धार्थ और स्ट्राइक पर है पीयूष और नीलेश सलामी जोड़ी के रूप में टीम ब्लेजिंग 11 के लिए। यस, दे विल हैव टू ब्लेज अवे टू अ गुड स्कोर एंड a flying start is the need of the hour for Blazing 11, winning the toss and opting to bat first. And not so well timed. We'll have to wait and watch. But yes, that ball was too far away from the man at a mid-wicket region. Smart running between the wickets. 2 important runs added. Still early days. Quite some cricket left to be played in the match. Tomorrow, day number 4, the 2 semi-finals and the grand finale of the Mumbai leg of the Ugro Capital Premier League Season 1. That was a short ball, misses out on that loose delivery. Siddharth has got that big responsibility to perform here under pressure as the opening bowler. Almost in the block hole, nicely dug away. Good bit of work with his foot in his follow-through. There will be some butterflies in the stomach. Early days, this is the big match. कयामत की शाम है दोनों टीम्स के लिए. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सेमीफाइनल्स खेलेगी. आउटसाइड द ऑफ स्टंप से उस गेंद को खींचा मिड ऑन के क्षेत्र में. अगर पहले ही अटेम्प्ट पर अगर गेंद को कलेक्ट करते तो शायद रन आउट करने का मौका बनता. The man on strike, Nilesh, and at the non-striking end, it is Ayush. And to bowl now, the second over from the com box end, it is Sagar. Well played. We'll have to wait and watch. That is enough. Wilson need to go over the head of the man in the deep. Just what the doctor ordered. That's a 6. DJ. The score is 12 for no loss, laying a good foundation here. Definitely this man Sagar is one of the aces up the sleeve of the bowling team, that is Aditya Shah and team, the Rising Phoenix. Once again they will have to rise to the occasion here if they have to play the semi-finals. May the best team win at the end of the day. Left arm over the wicket, the ball pitching outside the leg stump. The finger will never go up once it pitches outside the leg stump. 12 for no loss. Very well bowled. That is a beautiful delivery. He is looking in good rhythm.
Yes, he's bowling with good pace, more pace than what he was bowling with yesterday. He's looking much better tonight. Facing a left armour is always a tough proposition, a tough ask. And he bangs it in, and he'll have to maybe pay a big penalty. But yes, a good work by the man in the deep. They're going for the second, and we'll have to wait and watch. And no, says the umpire. Smart running between the wickets. 2 important runs added. End of 2 overs, 14 for no loss. Off to a steady and a sedate start here. Both the teams, early days. Lots of cricket left to be played in the match. Do not go away. Tighten your seatbelts. This match is about to take a flight. DJ. The batsman shuffles outside the off stump and puts that ball away into that vacant fine leg region for a boundary. After one good hard look at it, the umpire calls it a wide one. One extra run added takes the score to 19. All wickets in hand. ये दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी नींव रखते हुए बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के सर के पीछे से निकलती हुई और एक दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और अंत में बड़ी आसानी से वो दूसरा रन भी मुकम्मल किया. काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स का नजारा पेश करते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत. एक अच्छी साझेदारी रंग लाती हुई ये दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा. एक अच्छी नींव रखते हुए काफी क्रिकेट खेलना बाकी है इस वक्त. काफी सूझबूझ के साथ इस इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए थोड़ी सी धीमी रफ्तार से उस गेंद को किया था. थोड़ा सा रुक कर अपने शॉट को खेला. डीप मिड विकेट के क्षेत्र में केवल एक ही रन प्राप्त होगा. गेंदबाजी करते हुए अनिल राठौड़ 22 रन बिना कोई नुकसान के. नीलेश और आयुष की ये जोड़ी 6 रन्स मिले. बेहतरीन टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन. A change in pace, and yes, he gets his man. Although the bowler did not appeal one bit, there was a nick in it. And on his way back to the pavilion is the opening batsman Nilesh. This is big fish in the net. बड़ी मछली जाल में फंसी. DJ.
Parth. Sanket, the wicket keeper. Down the leg side. Yes, team Rising Phoenix will have to be very tight with their line and length. They got to be on the money at all times. This is the big game. They will be looking to hold the batters to a tight leash. शिकंजा कसना होगा यहाँ पर राइजिंग फिनिक्स ने. 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 30 रन हो चुके हैं, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर है. दैट वाज अ हाफ वॉली. बिल्कुल बल्लेबाज की रेंज में थी वो गेंद, मारने लायक थी, लेकिन ठीक तरह से सटीक फायदा नहीं उठा पाए उस हाफ वॉली गेंद का. उसके बावजूद 1 रन प्राप्त हुआ. रन संख्या अब जा पहुंचती है 32 रनों पर. Well played. Was in a slightly awkward position. Good hand-eye coordination to get that ball away. There is protection in the deep. The scoreboard ticking in the form of singles. Till the time the big shots are dried up, Aditya will not mind the singles being taken. ये जो वाइड रनों की जो एक्स्ट्रा रनों की जो खैरात है उसे रोकना होगा. You got to be ruthless in your approach. You have to be desperate for a win. Go for the kill. अच्छी गेंद, मच मच बेटर. ये लाइन और लेंथ लगातार बनाए रखनी होगी. अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद बल्लेबाज को वापस आना होता. रन संख्या थमी हुई 34 रनों पर, जबकि ये चौथे ओवर में 2 गेंदबाजी बाकी है. We are into the 4th over, 2 balls to come, 34 for 1. A decent start here. Difficult to predict anything at this stage. The match is in the balance. At the moment, the current run rate is a little more than 8 and over, not bad. But ideally, as they finish the innings, that run rate will have to go into that 9.5, 10 and over zone. Han Handsome will have to wait and watch. Well timed. Gagan Chumbi shot out. 6 runs मिले. क्या बात है. Four overs, 40 for 1. Current run rate 10 and over. That is fabulous. That has taken the height but not the distance. And he makes no mistake. A good running catch in the deep. Well done. Well caught. Just what the doctor ordered.
43 for 2. 2 balls to come in the 5th over. Because he shuffled even before the delivery could be bowled, it wasn't declared a wide one. The score remains steady on 43. Yes, so looking to pull things back here, team Rising Phoenix. The match is in the balance here. बिल्कुल समांतर स्थिति में है. किसी के भी पल डे में ये मैच जा गिर सकता है. इस वक्त कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल. 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्ट्राइक पर है बल्लेबाज संजय घोरपड़े और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कुमार आयुष. चलिए गेंद वाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं. हमारे दो अंपायर्स कैलाश टांडेल और सुहास वैद्य, दो सीनियर अंपायर्स आज के दिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए. चले ये लूस गेंद और सही अंजाम तक पहुंचाने में एक अच्छा शॉट लगाया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर. 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए. रन संख्या अब 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बहुत ही नाजुक मोड पर यह मैच हाथ थमा हुआ इस वक्त. क्रूशियल जंक्शन इन द मैच. Well ball. That's a good channel. A good line and length. Definitely pulling things back here, team Rising Phoenix. Much better in the middle overs. Putting the brakes on. Well bowled. Yes, this is what you call bowling a military line and length. This is immaculate. Good pitching. Getting all his experience into play here. That is Parth. The last 3 deliveries absolutely on the money. Very well bowled. He is holding the batters to a tight leash. This is just the kind of over that Aditya Shah wanted from Parth. Delivering the goods big time here. Living up to the expectations is Parth. And well fielded. That was going up and over. Well done. 2 runs added. The score after 6, 54 no loss. इस ओवर में वाकई में टीम राइजिंग फिनिक्स ने वापसी रची है. They are right back in the match. This is a mini comeback. अब ये मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ राइजिंग फिनिक्स के पक्ष में. आखिरी 12 गेंद आने बाकी और इन 12 गेंदों में कम से कम 18 से 22 रन से तो जोड़ना चाहेंगी ये टीम. यही मंशा होगी बैटिंग टीम की. वो कम से कम 70 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आना बहुत ही जरूरी है. एंड इफ दे गेट टू 75 दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सागर टू बोल द पेनल्टीमेट ओवर. Into the stumps.
A man at the edge of the circle. 1 run taken. 51. Yes, sir, they are bowling well in the middle overs, and that has been the most crucial factor. A गगन चुंबी शॉट, कोई मौका नहीं, 6 रन्स मिले, just what the doctor ordered. And it has taken the height and not the distance, and nicely pouched. Price to wicket, that is big fish in the net. A crucial wicket taken by Sagar. In 3 overs, 57 for 3. A total of 15 balls left to come. The final 15 balls. Of the mark with a single, the new man. That is cut away. A man at sweeper point. He covers the ground in long strides. But before the ball can come back to the wicket-keeping gloves, that's double easily taken. 60 for 3. 13 गेंदानी शेष, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर. Back of length delivery, well bowled. Yes, yes. Only 7 balls to go. Yes. Thank you. A 60 for 3. The final 6 balls to come. चलिए आखिरी 6 गेंदानी बाकी. They need at least 70-72. Anil to bowl the final 6 balls. Oh, well bowled. Cramping the batsman for room. And yes, the dreaded finger goes up. He's been issued the marching orders. 5 balls to come. 60 for 4. Yes, so well struck. Just a little short, and that will go past the boundary rope. Important boundary. Crucial runs being added here. 64.
right up there in the block hole. Well bowled, keeping the ball quite full. The batter not getting the desired elevation. 65 for 4. 3 गेंदानी शेष. The final 3 balls. Here we go. Two balls to go. 65. It's a beautiful batting surface. The ball is nicely coming onto the bat. White ball trying to do something extraordinary out there. No time to try out your variations. Just got to bowl wicket to wicket. Try and get your spell done with. Change in pace, well bowled. And yes, the bells are off. Run out. 66 for 4. And the wicketkeeper is going after it. And yes, only a single added, so 68 runs to win the match and make it to the semi-finals. The target for team Rising Phoenix is 48 balls and 68 to win the match. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा,
पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? You grow. And Chinmay on strike, Anil at the non-striking end. Playtime. Making his intentions absolutely clear to the very first delivery, that is Chinmay. Yes, so this is one of the most explosive opening batting pairs in the tournament, Chinmay and Anil. The man of the match winner in the first match, Anil. Very well bowled. That's such a good delivery. And nicely getting on the top of the ball, playing with soft hands, keeping the ball down, taking that single, giving the strike back to the more attacking Chinmay. 6 for no loss, the first over. No. Will have to be much better with his line and length. Always difficult to adjust your line and length to a left hand, right hand combination. Kumar Ayush, the star bowler for the team. He's bowling with good pace. He's got a very important role to play here, Kumar Ayush. Change in pace. What a superbly timed shot. This is bread and butter for this man, Anil. You cannot be bowling to Anil in those areas.
He will keep murdering you all day and all night long. This is easy meat for him. 18 for no loss after the first over. Will be a test for Sanjay, the captain of Blazing 11. He will have to effect those smart moves at the right time. He'll have to keep shuffling his bowlers. He's got to keep the right man in the right areas. The think tank has a job to be done here, team Blazing 11. Straight away he's been called for a throw, so he cannot for the bowl. Somebody else needs to complete his over. He cannot bowl now. Even he's been called for a doubtful action, so he too cannot bowl. Looks like they are shorter bowlers here. That is not a good sign here for team Blazing 11. This is extraordinary. That's a legal delivery, but it will run away into that extra cover region. To see this approach from Chinmay. He is looking to break the shackles quite early in the innings. Not wanting to play the waiting game. Looks like both these batters have an appointment to keep. They seem to be in a hurry to finish off the match. One more boundary.
check, check. Yes, runs coming in thick and fast. With that boundary, the score on to 34 for the loss of no wickets. All wickets in hand. A rock solid foundation. Well and truly on their way towards a victory here, team Rising Phoenix. Check, check, check. Too wide. One more boundary. And that's a wide. The ball is running away. The wicket keeper in hot chase. And yes, he goes for that second run as well and easily taken. 3 runs in the form of wide. 42 for no loss. "36 balls and only 26 to win." Your guess is as good as mine. That really tells you a story, the equation. They're off to a flyer. Too wide. Not done. Looking down the barrel of the gun, they are in dire straits. The Blazing 11 down on the mat. Straight away, no was the call from Anil. Yes, this has been such a good start, especially Chinmay has looked brilliant. And yes, Anil is a class apart. And Nilesh has given away too many extra runs in the form of wide runs. They need to exhibit better energy here, team. That will go out of the park. A rock solid foundation. Just going through the motions here.
A fantastic and refreshing approach here, both these batters. Very well bowled. Off the inside-ish edge. Shot fine. 53. End of the over. No, no, no. 2 to go. It's been too longish over. Why isn't he bowling over the wicket? And that is into the boundary ropes. A boundary. Both the batsmen are on 24 of 10 deliveries each. दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने 10-10 गेंदों में 24 रन बनाए. एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी. देखिए 48 रन्स और 12 रन्स अब तक एक्स्ट्रास के रूप में आए हैं. That's a killer. That is a killer. Only 8 more to win. केवल औपचारिकता बाकी. ये अब सुनिश्चित हो चुका है कि राइजिंग फिनिक्स सेमीफाइनल बिल्कुल खेलेगा. ऑल विकेट्स इन हैंड. केवल और 8 रनों की दरकार. ओनली 8 more to win. The heads are down for the Blazing 11. And those will be 5 wide runs. So only now 3 more to win. It's over. Congratulations to Team Rising Phoenix for making it to the semi-finals. The journey for Blazing 11 comes to an end right here.
अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, And the Vice Chairman and the Managing Director of Ugro Capital. Chile, can we have both the teams here? Rising Phoenix and Blazing 11 for one last time, both the teams together. Blazing, can we get you guys here? Yes, good evening and welcome to the post-match presentation. We have with us Mr. Sachin Nath, sir. Good evening, sir, once again, and welcome to the presentation arena. The man of the match for the just concluded match between the Rising Phoenix and the Blazing 11. Anil Rathod, the second man of the match award. 25 runs and 1 wicket, and collecting it at Mr. Sachin Nath sir's hands. It will inspire him. That's a good moment for him. Congratulations, well done. 25 not out, and he also picked up a wicket. Sachin, congratulations, your second man of the match. Tomorrow, Anil, yes, congratulations, well done, and maybe tomorrow hat-trick of man of the match awards. That will be great. Yeah, definitely. बस इतना ही बोलोगे? How was it? How was the wicket behaving? And that was a good partnership. बड़ी आसानी से उस लक्ष्य को आपने चेस कर दिया. एक्चुअली रन बनाने दिया नहीं उन्होंने, सारा कुछ एक्स्ट्रा में चला गया. तो चले, कल सेमीफाइनल मैच खेलना है, आपको ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. टुमारो वी मीट अगेन एट 5 o'clock. राइट मैडम? 5. पैसे का आप भी टेंशन मत लो. यूग्रो कैपिटल का ग्रोएक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी. इतनी जल्दी? You grow. अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। अरे सर पैसे नहीं है, मटेरियल वटेरियल कैसे आएगा? अच्छा,